I think we can start our proceedings for the day, and others will join in as they come along, so that we are not delayed unduly, and the time that you all have budgeted is utilized effectively. Uh, Friends, ladies and gentlemen, distinguished participants, policing in India is the backbone of good governance and citizen welfare. And no citizen can realize his true potential and live happily until and unless there is adequate security that is provided to him. It's a basic and fundamental need. And commercially also, no corporate can function effectively until and unless there is good security and a suitable environment of security, which is why policing and security form an important part of the overall parameters of the ease of doing business for any country and any corporate. I am indeed happy and privileged to be announcing the participation in today's discussion on a crime-free India and the role of policing in that. We have two extremely distinguished panelists. Mr. Maithili Sharan Gupta is an IPS officer of the 1984 batch of the Madhya Pradesh cadre. He is no less a firebrand than the famous Hindi poet whose name he has taken. And just as Maithili Sharan Gupta, the poet, wrote the famous work Bharat Arti, which was a monumental work which recounted India's past glory, truthfulness, and virtues, and which proved to be the beacon for the freedom struggle of India, and for which the poet Maithili Sharan Gupta was given the epithet of Rashtrakavi by none less than Mahatma Gandhi. How is this coming in? Okay. We don't want. Okay, so how is this picture coming in? Stalin, can you check? Yeah. Okay. So, okay, that's okay. So, also our own Maithili Sharan Gupta Sahab, who is an IPS officer, he has also taken it upon himself to make a difference in public life, and it has reflected in his entire career, which has been a career with a difference of solid policing, and he wants to now reform the Indian policing systems and has launched a mission called Crime-Free India Abhiyan. The issues that he will be covering in his discussion will be FIRs, investigation, and justice. The second panelist and discussant today is Shri ML Sharma, an extremely celebrated IPS officer who in a long career of 38 years has held some of the most important positions that a police officer can hold, culminating with his final posting as the Special Director CBI. Mr. ML Sharma is well known all over the country as a solid policeman, as a thinker, as a distinguished legal mind, and he's constantly being sought for by the Supreme Court, by the various high courts for various issues as an amicus curiae. He was tasked with giving a report on the Ranjit Sinha case, with the matter of the IPL spot fixing and betting scandal, and various other matters which are endless in number. And as we are all aware that he has just published a book on the RTI and jurisprudence around it of 800 pages. We are indeed honored and privileged to have him and to be able to hear him today. Before I move forward further, just a few quick rules which are part of our webinar.
participants and questionnaires need not say anything which either demeans any religion, community, or individual. This is an apolitical forum, so please keep it apolitical. Questions should be asked only in the chat room, and if that fails, by raising of hands. Gentlemen, before we start the actual discussion, because we are doing it on this platform called Cunsult, I just want to quickly tell you that Cunsult is an extremely useful platform where citizens, students, and anybody can approach experts in various fields. We have about 500 experts across 65 sectors. Security, defense, and police is just one of the sectors. And now I'll quickly play a video of Cunsult. It will take about 3 or 4 minutes, and then we can start our discussion. A quick playing of the video, please. Take the torch of knowledge and build the palace of the future. There are 450 crore internet users in the world. Professionals, researchers, students. Everybody has doubts and questions about something or the other. Search engines flood us with information. They give us both the positive side and the negative side of anything. They cannot tell the difference between good and bad, between true and false. What we need is somebody real to discuss our queries with, not a robot that has been programmed with limited answers. We need a human interface to give experience, practical wisdom. That is where Cunsult comes in. Cunsult is an instant advice facility that instantly connects people thirsty for experiential insights with real people who are rich in experience, insights, and wisdom. You can connect directly with experts in any of 65 sectors to begin with. Experts can be anywhere in the world. You can instantly message them, you can call them, you can read their articles and see their video blogs, and ask them analytical questions. Communication can take place instantly, 24/7, irrespective of the location of the client or the expert. ये जो आपने कंसेप्ट दिया है कंसल्ट सर, ये फिलॉसफी है, ये 100% सक्सेसफुल होगा, क्योंकि ये नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन है. इससे नेचुरली जो एक्सपीरियंस व्यक्ति है उसके अनुभव से जानकारी मिलेगी. तो बहुत अच्छा कंसेप्ट राघव जी आपका है, ये मुझे पसंद है आपकी आइडिया. इट्स वेरी गुड और ये क्लिक होगा. कंसल्ट प्रोडक्ट को मैंने बड़े ध्यान से देखा. मेरे विचार से ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी प्रोडक्ट है. तो इन्होंने क्या किया है, इतनी सिंप्लिसिटी से एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट पर आप जाइए, अपना नाम दीजिए, अपना ये कीजिए और एक्सपर्ट को सिलेक्ट कीजिए और आपको सारी एक्सपर्टीज, सारे एरियाज की एक्सपर्टीज इन्होंने एक ऐप पर दिलवा दी है. और ये बहुत ही यूनिक चीज है, बहुत यूनिक चीज है, क्योंकि मैंने देखा, मैंने ट्राई कंपेयर करने की कोशिश की, कंसल्ट जैसा कोई और ऐप है ही नहीं. और मैं इनकी बहुत तारीफ करना चाहूंगा और सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि ये पूरा सक्सेसफुल हो और हम लोग नीति आयोग से भी इनके साथ मिलकर आगे ले चले. Consult with experts instantly. Choose experts by name, sector, company, experience, location. See their detailed profile. If the light is green, click and speak or chat with experts instantly, or schedule a call or chat. Send an introductory message to the expert and set the tone for the discussion. Buy consultation time at a low, flat rate.
View your past and future bookings in My Bookings. To see video commentaries and buy courses, click courses and videos, and then you can consult with an expert. Have more queries about Cunsult? Go to FAQs and settings. To message experts instantly, when in doubt, consult. We can close the video. I now invite Shri Maithili Sharan Gupta, IPS, to kindly address all of us on the 3 topics that we have decided to discuss today. One is how to ensure that FIRs are properly registered, how to ensure proper investigation and security, and thirdly, how to ensure justice for all citizens in their dealings with the police and to carry their matters forward to their logical conclusions. Shri Maithili Sharan Gupta ji. Thank you. First of all, sir, I would like to thank you for a very lucid and elaborate introduction. And secondly, I would like to congratulate for bringing Cunsult kind of app, which would be a really a source of knowledge and source of guidance for public at large to resolve their problems. मैं सर लार्जर कंजम्पशन के लिए अपनी भाषा को हिंदी में डेलिबरेटली चूज करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे देखने वाले लोग जो होंगे प्रॉब्ली उनको अंग्रेजी में कोई दिक्कत महसूस हो सकती है, और पुलिसिंग को बहुत ही साधारण और सिंपल भाषा में मैं पेश करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि पुलिसिंग इज नॉट गवर्न्ड बाय द प्लेजर डॉक्ट्राइन। ये किसी की खुशी वाली बात नहीं है। रूल ऑफ लॉ मस्ट प्रिवेल। अधिकांश लोगों को यह मालूम नहीं है कि यह राज्य सरकारों की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर शेड्यूल 7 एंट्री 2 ऑफ लिस्ट 2। इस रिमार्क के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि एफआईआर दर्ज करना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है, और आंकड़ों को सीमित रखने के लिए, आंकड़ों को छोटा रखने के लिए नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। कानून में 2 ही प्रावधान हैं। आपकी जो समस्या है वो संज्ञेय हो सकती है, आपकी समस्या असंज्ञेय हो सकती है। यदि संज्ञेय समस्या है तो उसमें आपकी एफआईआर दर्ज होना चाहिए सेक्शन 144(1) के तहत बाय एसएचओ, और यदि एसएचओ आपकी रिपोर्ट नहीं लिखता है तो 154 का ही सब क्लॉज 3 जो है यह वाइड पावर एसपी को देता है कि वह जो है उसका संज्ञान ले, या तो वो स्वयं जो है इन्वेस्टिगेट करे, या अपने किसी भी सबऑर्डिनेट को वह इन्वेस्टिगेशन को मार्क कर सकता है। सेक्शन 144(3) इज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्शन इन लॉ। इसमें एसपी जिस भी सबऑर्डिनेट को वह इन्वेस्टिगेशन देगा, उस व्यक्ति को उस पर्टिकुलर प्रकरण में एसएचओ के समस्त पावर स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। और आज एक आम जनता के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि साहब जिस थानेदार ने हमारी बात नहीं सुनी उसी के पास हमारी एप्लीकेशन भेज दी और उसने उसे गुड़म गुड़म करके या शिकायत बढ़ा चढ़ा के दी गई, इस तरीके के जुमले के साथ उसको कहीं न्याय नहीं मिलता है। तो सेक्शन 154(3) एसपी को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर से आर्म कर रहा है कि उसे जो नॉर्मल हायरार्की है एसएचओ और डिप्टी एसपी और एडिशनल एसपी, उससे वो बंधा हुआ नहीं है। वो अपने किसी भी अधीनस्थ को वह शिकायत दे सकता है। तो एफआईआर के बेसिकली 3 सोर्स है। एक विक्टिम जो कि थाने में जाके रिपोर्ट करता है, दूसरा बहुत बड़ा सोर्स है पब्लिक एट लार्ज। ये अधिकांश लोगों को मालूम ही नहीं है
कि सर्टेन सेक्शंस में तो यू आर ड्यूटी बाउंड टू रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस। यदि आपके संज्ञान में किसी भी तरीके से कोई संज्ञेय अपराध आ जाता है और जो लिस्टेड अपराध हैं, यदि उन अपराधों की आप सूचना नहीं देते हैं तो यह अपने आप में एक अपराध है और इसमें ऑनस ऑफ प्रूविंग योर ऑनस इनोसेंस लाइज ऑन यू। तो आप एक मासूम व्यक्ति हैं, आपने गलती नहीं की है, यह आपको सिद्ध करना है। ज्यूरिस्प्रूडेंस का इतना भारी जो है इसमें बदलाव किया गया है। और कोई ये पूछ सकता है कि साहब इसमें ये बड़ा अधिकार कहाँ है, ये तो बड़ी लायबिलिटी है, पुलिस हमें रिपोर्ट ना करने के लिए प्रोजिक्यूट कर सकती है और हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं मासूम हूं, मैं इनोसेंट हूं, तो ये अधिकार है या मुसीबत है? तो मैं आम जनता को ये बताना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा अधिकार है। यदि सेक्शन 39 नहीं होता तो विक्टिम के अलावा और कोई व्यक्ति न्याय के लिए नहीं पहुंच सकता था। अब जो है, जैसे राघव सर ने इस कंसल्ट बनाया है, ऐसे ही ऐप के माध्यम से रिपोर्टिंग को कंड्यूट किया जा सकता है और लीगली सिस्टम के पास भेजा जा सकता है और उसमें जो है विद सर्टेनिटी एक एफआईआर दर्ज होने का, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का और सर्टेनिटी टू द जस्टिस जैसे कॉन्सेप्ट को इम्बाइब किया जा सकता है। अभी जो पूरी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में एक आदमी जो है परेशान होता रहता है, विवश होता रहता है, उसे मालूम नहीं रहता है कैसे क्या करें। और आई डोंट नो कि किस हद तक आप लोग जमीनी हालात से सहमत होंगे, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अब अधिकांश केसेस में थानों में एफआईआर दर्ज कराना एक चुनौती होती जा रही है। जब तक पॉलिटिकल बॉस या कोई ब्यूरोक्रेटिक बॉस इंटरफियर करके जो है ना उसमें कॉग्निजेंस कराने में मदद नहीं करता है, तब तक जो है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के विस्तृत जो है ना सिक्वेंशियल जजमेंट के बावजूद भी एफआईआर दर्ज कराना आज एक बहुत बड़ी चुनौती होती जा रही है। हम जो है एज ए विक्टिम अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए परेशान होते हैं, यही हमारी सब मुसीबत की जड़ है। क्योंकि जब एक विक्टिम थाने में जाता है और वो अपनी एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करता है और वहां बैठा हुआ हवलदार या थानेदार अपने आंकड़ों को कम रखने के लिए वो किसी प्रकार उसको जो है ना बाहर बिना रजिस्टर किए भगाना चाहता है, और जब आप बहुत ज्यादा चेपते हैं तो वो आपसे एक एप्लीकेशन ले लेता है। एप्लीकेशन लेने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है। यदि एप्लीकेशन जस्ट फॉर द कंटेंट सेक ले रहे हैं कि साहब आपने जो लिखा हमने उसी को एफआईआर में ट्रांसफर किया, तो दैट मे बी द डिफरेंट थिंग। लेकिन यदि एप्लीकेशन लेके उसमें इंडिपेंडेंट जांच करने जैसा यदि कुत्सित विचार है तो यह पूर्णतया नियम विरुद्ध है। जब यदि कोई हमारी एफआईआर नहीं लिख रहा है तो हम जब वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो जो उस पर लिखते हैं कि फॉर इंक्वायरी एंड रिपोर्ट, यदि वो इंक्वायरी और रिपोर्ट लिखने की बजाय यदि वो उस एप्लीकेशन को पढ़ के कहें कि मैं वरिष्ठ अधिकारी हूं और मैंने जो है ना इस एप्लीकेशन को पढ़ा और एप्लीकेशन से इन अपराधों का और इस संज्ञेय अपराध का होना प्रतीत होता है, थाना प्रभारी कृपया आप मुझे अवगत कराएं कि आपको किन कारणों से यह संज्ञेय अपराध विदित नहीं हुआ। मात्र इतना प्रोसीजरल परिवर्तन से पूरे जो है ना ग्राउंड की डायनामिक्स बदल जाएगी। संभवतः हम सीनियर ऑफिसर भी अपराध ना पंजीयन के फेवर में ही अपने वोट ज्यादा दे रहे हैं। जब हम कोई पोर्टल बनाते हैं तो हम शिकायत दर्ज करने का पोर्टल बना देते हैं, एफआईआर दर्ज करने का पोर्टल नहीं बनाते। तो ये पूरी डायनामिक्स जो है अपराध का पंजीयन कराना और रोलिंग ऑफ द लॉ इनटू मोशन, जो कि एफआईआर इज द इनिशियल फर्स्ट स्टेज फॉर दैट, एक अपने आप में दिन प्रतिदिन एक बहुत बड़ी चुनौती हो जा रहा है। और उस चुनौती से निपटने के लिए
कानून में 3 प्रावधान है। एक प्रावधान तो जब जो विक्टिम जो है 154(1) के तहत या 154(3) के तहत या 156(3) सीआरपीसी के तहत या 482 के तहत करता है, और दूसरा जो है यदि वो कंटेंट किसी माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को मालूम पड़ता है, और यदि वो व्यक्ति अपने सिग्नेचर से यह खबर थानेदार को देता है कि सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत हमें जो है यह संज्ञेय जो है अपराध की जानकारी मिली है और यह मेरा लीगल कर्तव्य है कि मैं इसे आपको संसूचित करूं, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपका भी ये लीगल कर्तव्य है, इट इज योर लीगल ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर ऑफेंस अंडर सेक्शन 154(1). अब अज्यूम करिए कि यदि थानेदार आपकी द सेम सिस्टम कैन हेल्प यू, ये सेक्शन जो सिस्टम है मैनुअल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, ऑटोमेटेड हो सकता है, क्राइम फ्री भारत का हो सकता है, लेकिन दैट सिस्टम कैन टेक द होल डॉक्यूमेंट टू द एसपी and then SP can be requested, it is your obligation, legal obligation under section 154(3) of the CRPC, please discharge your obligation. Assume करिए whatever be the circumstances, SP जो है उसकी मदद नहीं करता है, then the system can take it to court under section 156(3) read with section 190 of the CRPC. इसका मतलब है जो मजिस्ट्रेट जिसका क्षेत्राधिकार है वो जो है संज्ञान ले सकता है, और जहां पर सामान्य केस में मजिस्ट्रेट को पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर करने से रोका गया है और वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन स्टेज में इंटरफियर नहीं कर सकता है, लेकिन यदि संज्ञान 156(3) सीआरपीसी के तहत लिया गया है तो उस केस में मजिस्ट्रेट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर मिल जाते हैं to make it sure that in a proper investigation is done, and he can even interfere in between also. So it is not only the empowerment of the victim, it is not empowerment of the citizen, but it is empowerment of the judiciary also. अब यदि assume करिए कि जुडिशरी भी और मजिस्ट्रेट भी जो है विक्टिम को मदद नहीं कर पाता है, तो सीआरपीसी में एक और प्रावधान है जिसको सेक्शन 482 कहते हैं, जिसके तहत हम हाई कोर्ट में को जो है ना अप्रोच कर सकते हैं। और यदि एज्यूम करिए किसी कारण से किस्मत खराब है और हाई कोर्ट ने भी मदद नहीं की, तो ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के जो सिक्वल जजमेंट है, जिसका सम टोटल यह है कि पुलिस को डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है यदि रिपोर्ट के कंटेंट से संज्ञेय अपराध विदित होता है तो उसे वह अपराध पंजीयन करना चाहिए। यदि कुछ केसेस में वो जांच कर सकता है, लेकिन वो जांच भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, विवेचना नहीं होगी, वो जांच जो है इस बात की होगी कि क्या संज्ञेय अपराध घटित हुआ है। और जैसे ही वो पुलिस इस निष्कर्ष पे पहुंचती है कि संज्ञेय अपराध घटित हुआ है, तो the first and foremost thing he is supposed to do to register an FIR, and वो register FIR करके फिर उसका प्रॉपर उसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ये कानूनी स्थिति है। जमीनी स्थिति इसके जस्ट भिन्न है। जमीनी स्थिति ये है कि दिन प्रतिदिन अपराध का पंजीयन किया जाना एक बड़ी चुनौती हो गई है। विक्टिम स्वयं भटकता है, केसों का संज्ञान नहीं लिया जाता है, और कोई ऐसा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है जो पूरे सिस्टम को फोर्स करे। जैसे बिगिनिंग में हमने एक रिमार्क दिया था, पुलिसिंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अंडर एंट्री 2 लिस्ट 2 शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन किसी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ना होने के कारण सैकड़ों की संख्या में हत्याएं होती हैं, ओपन हत्याएं होती हैं, लोग वालों को जो है रोड पे बूचर कर दिया जाता है, और इसके बावजूद भी लोगों की FIR दर्ज नहीं होती है। ऐसे ढेर सारे बड़े कांड हैं। अभी यदि हम रिसेंट कांड देखें तो चुनाव के बाद जो हत्याएं वेस्ट बंगाल में हुई हैं, या 1990 में जो हत्याएं
कश्मीर में हुई हैं, या केरल में जो है 1820-1830 के बीच में हुई हैं, और ये बड़ी संख्या में हुए हैं जिनका इवन संज्ञान नहीं लिया गया। ऐसे ढेर सारे केस हैं जिसमें मर्डरर ने अपनी सेखी बगाड़ते हुए इस बात को कहा है कि ये मर्डर हमने किए हैं, लेकिन फिर भी जो है सिस्टम ने उनकी मदद नहीं की है। लिहाजा आपकी एफआईआर दर्ज हो और यह एज ए राइट टू द सिटीजन आपकी एफआईआर दर्ज हो, यह एक आज के समय में एक बहुत बड़ी जमीनी चुनौती है। और आई एम वेरी श्योर कंसल्ट वुड बी जो है गिविंग ए काइंड ऑफ ए गाइडेंस, एंड आई विल से कि क्राइम फ्री भारत विल बी प्रोवाइडिंग दैट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, जिसके माध्यम से जो हमने 5 लीगल बातें कही हैं, 154(1) सीआरपीसी, 154(3) सीआरपीसी में एसपी, 156(3) में मजिस्ट्रेट, 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट जज, और पीआईएल एंड कॉन्टेम्प्ट पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट यूनिक केसेस में लेट द सिस्टम शुड अप्रोच। एंड जब जो सिस्टम अप्रोच करे वो एज ए सिटीजन अंडर हिज डिजिटल सिग्नेचर द होल कंटेंट शुड गो। अब ये बात तो हमने इंडिविजुअल केस की बात कही है, क्या यहां से हम ग्रेजुएट करके एक एडमिनिस्ट्रेटिवली अकाउंटेबिलिटी की तरफ नहीं जा सकते? अल्टीमेटली थानेदार का ये लीगल और प्रशासनिक दोनों ही कर्तव्य है कि वो फरियादी को सुने और यदि संज्ञेय अपराध है तो उसमें संज्ञान ले। इसमें हम एक तीसरी बात कहना भूल गए थे जो मैं अभी यहाँ जोड़ना चाहता हूं कि 2 की जगह एक तीसरा अधिकार भी है जिसको कहते हैं सियो मोटो पावर या स्वविवेक अधिकार। हमारे थाना प्रभारी को स्वविवेक सियो मोटो पावर है कि यदि उसके संज्ञान में किसी भी माध्यम से यदि संज्ञेय अपराध की जानकारी आती है तो उसे किसी कंप्लेनेंट की जगह जरूरत नहीं है। क्योंकि मुझे कहा गया है कि मैं कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो कि पब्लिक स्टेटमेंट हैं, जो कि प्रथम दृष्टया कानून में जो है अपराध बनते हैं, यदि उनका संज्ञान पुलिस सुयो मोटो की तरफ लेती तो इस तरीके के भयावह जो है स्टेटमेंट देने की किसी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन सिंस माई कमेंट में बी कंस्ट्रूड समवेयर इट मे हर्ट द फीलिंग ऑफ समवन, तो मैं उस पर इलाबरेट नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं यह बात कहना चाहता हूं कि ऐसे ढेर सारे ऑफेंस रोज हो रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पे चारों तरफ फैल रहे हैं। वो थाना प्रभारी के यदि संज्ञान में नहीं आते हैं तो उसे इस बात में उसके प्रति प्रशासनिक कार्रवाई होना चाहिए कि आपका इंटेलिजेंस ठीक नहीं है, आपको आपका क्षेत्र का नॉलेज ठीक नहीं है। जब बच्चे को ये चीज मालूम है तो आपको क्यों नहीं मालूम है? लिहाजा यदि सियो मोटो जो है ना जो पावर है पुलिस का, उसका यदि हम जनहित में यूज करते तो शायद हम रूल ऑफ लॉ बेहतर ढंग से इस्टेब्लिश कर सकते। अब क्राइम फ्री भारत ने इस मैकेनिज्म को एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से हेल्प करने का एक सिस्टम जो है दैट इज इन मेकिंग। उसमें पहला है दीज 5 लीगल अकाउंटेबिलिटीज, जिसमें कि द सिस्टम विल ट्राई टू हेल्प मेकिंग यूज ऑफ द सेक्शन 39 सीआरपीसी। तो विक्टिम जो अपने लेवल पे कर रहा है वो करे, सिस्टम जो है अंडर सिग्नेचर ऑफ हिज ओन वॉलंटियर will take it as a legal obligation to the police, number 1. Second, it will compile the whole data set and then he will try to bring in the administrative accountability. तो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी थानेदार से लेके एसपी से लेके डीआईजी से लेके आईजी से लेके एडिशनल डीजी से लेके डीजी से लेके और होम डिपार्टमेंट से लेके होम मिनिस्टर और गवर्नमेंट की एट लार्ज देयर इज अ रिस्पांसिबिलिटी। यदि ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन कंपाइलेशन यदि बैकएंड इंजन पे होता है और ये पूरा जो है रिस्पेक्टिव जो है ना सुपीरियर ऑफिसर्स के पास यदि वो भेजा जाता है और यदि वो सुपरवाइजरी ऑफिसर यदि रिएक्ट नहीं करता है, आई फील दैट responsibility of that supervisor officer can also be if could be जो है ना properly enforced, it will be making a sea difference. अब हम मान लेते हैं कि चूंकि सैया भाई कुतपाल और हर किसी को इस बात में रुचि है कि अपराधों को आंकड़ों को झूठे ढंग से कम रखा जाए, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं होगी। तो अब हम तीसरी अकाउंटेबिलिटी की तरफ चलते हैं, दैट इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी। तो सिस्टम जो है
अब जो है एट लार्ज सभी थानेदार, जो थानेदार है उसके सभी प्रकरणों के साथ इस व्यक्ति ने 500 प्रकरण दर्ज नहीं किए हैं, क्या सरकार इसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी? इस जिले में इतने 1000 केस जो ना रजिस्टर नहीं हुए हैं. दिस इज द डिटेल्स ऑफ द केस. व्हाट एक्शन विल बी टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट दैट? तो इस तरीके से हम उसकी जो लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी है, जो असेंबली के प्रति अकाउंटेबिलिटी है सरकार की, उसको इन्वोक करने का हम एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बना सकते हैं. अब लास्ट जो है ना आता है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी. तो पुलिसिंग और अच्छी पुलिसिंग का मेन मतलब होता है कि सबसे पहले तो संज्ञान हो जाए, फिर विवेचना हो जाए, फिर जल्दी से उसको प्रोसिक्यूट करते हुए उसमें न्याय उसे मिल जाए. दिस ऑल पुट टुगेदर विल मेक ए पुलिसिंग. एंड पुलिसिंग जो है इज नॉट ए प्लेजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर एंट्री 2 लिस्ट 2 शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब सवाल उठता है कि यदि सरकार की खुद की कंप्लिसिटी है और सरकार किसी भी पॉलिटिकल कारण से या अपॉलिटिकल कारण से अपनी ही जनता की बात नहीं सुन रही है, कैन वी हैव सम सिस्टम टू इन्फोर्स दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी? तो संविधान में एक आर्टिकल 356 है जो कहता है कि फेलोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी. सो नाउ सवाल उठता है कि यदि एट लार्ज 80 या 90% केसेस में ऑफेंसेस रजिस्टर्ड नहीं हो रहे हैं, whether we can legally construed that is a failure of constitutional machinery, and can we invoke article 356? If we are successful invoking this article 356 even in one case, I think it will shift whole paradigm. अब सवाल उठता है कि संविधान ने क्या मैकेनिज्म दी है इसको करने के लिए? तो संविधान में गवर्नर का जो पद है उसका एक काम है कि वो मंथली एक रिपोर्ट भेजे कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के हिसाब से चल रही है. यदि गवर्नर, जो कि कई बार पॉलिटिकल रोल अदा करते हैं, यदि फेयर ढंग से वह इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को पुलिसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी के उसमें यदि कहे, और स्पेशली उन स्टेट में जहां पे कि पूरा जो है रूल ऑफ लॉ पूरी तरह से डिमोलिश हो गया है, जहां पर कि पूरा तंत्र मिल गया है, जहां पे पब्लिक एट द रिसीविंग एंड, जहां पर की सुनवाई नहीं हो रही है, जहां बिना नेता या बिना ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस के FIR दर्ज नहीं होगी, जहां इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, यदि हमें ऐसी एक स्टेट को भी इस ऑब्लिगेशन में ला सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन में, देन इट विल बी चेंजिंग द होल पैराडाइम. तो अब सवाल उठता है कि गवर्नर महोदय पॉलिटिकल फिगर बन गए हैं, वो ही इज आल्सो टोइंग ए पॉलिटिकल लाइन. इस परिस्थितियों में क्या हम गवर्नर को भी कहीं फोर्स कर सकते हैं क्या? तो मुझे लगता है कि यदि ये रिपोर्ट गवर्नर के पास भेजी जाए कि देखिए सर, दिस इज द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एंड इट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू सबमिट ए मंथली रिपोर्ट, काइंडली इंक्लूड दिस रिपोर्ट while sending it to the president. अब अज्यूम करिए कि why that governor should listen to you. तो हम PIL लगा के we can try to get the mandamus to instructing governor कि जो ये फैक्चुअल रिपोर्ट दी गई है, डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट दी गई है, यह जो है प्रेसिडेंट के पास भेजे वो, और प्रेसिडेंट इन टर्न जो है if he जो है ना refers the matter to the parliament, or he refers the matter to the prime minister and he refers the matter to the cabinet, and if article 356 could be invoked, if that could be done even in one case, it will change whole paradigm. इसका जो दूसरा पैरा है कि हम जो है टेक्नोलॉजी का यूज करके डिफरेंट तरीके का जो सपोर्टिव मैकेनिज्म थाना प्रभारी को दें, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दें, तो एक बहुत ही साधारण और औसत दर्जे की बुद्धिमत्ता रखने वाला पुलिस ऑफिसर को इनफेलिबल एविडेंस फ्रॉम क्राउड सोर्सिंग, फ्रॉम जो है रिक्विजिशनिंग अंडर सेक्शन 91 CRPC, और मेकिंग यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, मेकिंग यूज ऑफ द डिजिटल चित्रगुप्त, if we can really help in collection of the infallible evidence that to within a say 15 days or so, leaving few stray cases,
And then if we can really make use of the technology within these four walls, we can have a distributed video trial system, which will be much more transparent from now. And we can have n number of the features whereby we can have a very transparent trial, which will be more transparent, which will be more effective. And by having more number of the ad hoc judges and ad hoc advocates, probably we can set a timeline that all cases must be decided within a period of 1 month. यदि हम ऐसा कर पाते हैं, then अभी जो crime जो है, it has become the biggest sector of economy. Nothing is more paying than this sector of economy. ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें आप एक फोन करें और एक खोखा आपके चरणों पर पहुंच जाए? इतनी प्रोडक्टिविटी किसी इंडस्ट्री में और किसी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में नहीं है. So if I am permitted to say so, I would like to say that there is a need of a transformational need. I call upon everybody to really join crime-free Bharat, and every citizen must get the 5 certainties: certainty of registration of FIR even without visiting police station. And I would like to add here, if someone is, because we are in habit of misusing whatever the system tools or powers given, hence there should be twin certainty. If somebody is lodging false and fabricated FIR, and if that could be established through the infallible evidence, the person should be meted out with the same punishment for which he fabricated that FIR. The second certainty is helping that investigating officer, making use of the technology, making use of the IoT devices, making use of the artificial intelligence, CCTVs, including the artificial requisition system, making use of the artificial intelligence. And if system is not behaving, sometime हमने सिस्टम को इतना लॉर्ड बना दिया है कि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एक बौना अधिकारी समझता है. उसको लगता है इसकी हिम्मत कैसे हो गई, ये हमारे कार्यालय में कैसे घुस गया है. So what I feel कि let the system should help, the enforcement of the 91 should be the responsibility of the technology. And if somebody is not really complying with the legal order of the police authority, which he is legally supposed to comply with, in that case, the system must help in enforcing it through the 93 and 94 CRPC. And if required, the compasses should be raided, and that evidence must be captured and must be available in infallible format. जो भी evidence जहाँ पे भी capture हो रहे हैं, वो date, time और location के साथ stamp हों, and they should be logged with the hash value, जिससे कि उनका manipulation should become a impossibility. आज कल बहुत जो है ना एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, like deep fake, जिसमें कि बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट की जा सकती हैं, लेकिन by instantaneously locking with the date, time and location and protecting it with the blockchain technology and hash value, we would be in position to remove all those manipulation. So these evidence will become infallible in nature. यहाँ पे मैं रुकना चाहूँगा. मैं चाहूँगा कि this institutional mechanism like Cunsult, it is a easy, and if it is adopted by the government, I think we will be in position to establish rule of law. तो हम FIR भी दर्ज करा पाएंगे, हम एक साधारण पुलिस ऑफिसर के माध्यम से बहुत सशक्त इन्वेस्टिगेशन भी करा पाएंगे, और हमारा वो साधारण सा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बैकएंड इंजन की मदद से वो सब तमाम इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा जो आज के पुलिस ऑफिसर के दिमाग में नहीं आता है, या कुछ बहुत ही एक्सपर्ट पुलिस ऑफिसर जो है, बड़े बड़े जो है ना टीम, तो 20-20, 30-30 अधिकारियों की टीम जब लगती है और महीनों मेहनत करती है और कई बार सालों मेहनत करती है, तब वो किनारे लगती है. प्रॉब्ली उस क्वालिटी का और उससे बेहतर क्वालिटी का इन्वेस्टिगेशन would be doable by the most ordinary police officer. Thank you, Maithili. And through the distributed trial system, we would be in position to ensure by managing through the same rules, हम जो है 1 महीने के अंदर ट्रायल इसी सिस्टम के विदित और इसी रूल ऑफ लॉ और इसी लीगल फ्रेमवर्क के तहत
ये किया जा सकता है। कोरोना में इसका एक झलक अपन को ऑलरेडी मिल गई है। नाउ वी कैन इंस्टीट्यूशनलाइज इट। इसके साथ मैं अपनी वाली को यहाँ पे विराम देता हूं और मेरे सीनियर कलीग माननीय श्री ML शर्मा साहब यहाँ हैं। उनका बहुत रिच अनुभव है और उनका अनुभव न केवल पुलिसिंग का है, न केवल CBI का है, न केवल डिस्ट्रिक्ट पुलिस का है, बल्कि उन्हें कोर्ट का भी बहुत गहन अनुभव है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी जो इसके ऊपर कमेंट्स रहेंगे, that will be basically would be very, very meaningful for me to absorb them and try to implement in the crime-free Bharat institutional mechanism. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. I'll now request ML Sharma Saab to please offer his deep insight, experience and comments on the topics that Mr. Maithili Sharan Gupta has raised. For the public consumption, I just want to clarify that cognizable is sange or sangyan lena means cognizance lena. Sir, please carry on. Thank you, Raghavji, for having me here. So our friend Maithili Sharan Gupta has covered all aspects, legal aspects on these three topics. So we are supposed to conclude this session by 7. It's already 6:45. No, so we can take some more time, sir, for question answer. So the time is not a constraint. I'll like to give more time. I'd like you to give more time for question answer session. So I'll just try to finish off what I have to say in 5 minutes time. Now, first part is FIR. Our friend has very ably articulated the dilemmas. So one thing I want to say, legal position is all right. You have mentioned this, everything is there. You know, this Lalita Kumari was state of UP. It has not solved the problem. It has created a further problem because Supreme Court has given a handle to the police officers to first conduct informal inquiry. It's not called preliminary inquiry, it's called informal inquiry in certain matters, like matters relating to business, matters relating to husband-wife disputes and commercial transactions and so on and so forth. Now, result is, and I can say it from experience because I run a law firm now, also I'm consultant to many companies, cheating cases anywhere in the country when you go for registration, they simply refuse to do. SOJ says, I have no power. I have to seek permission from the deputy commissioner, from the superintendent police, and big cases, of course, they will do for force, but small cases they simply refuse to do. So Lalita Kumari has created problem because now they are using as a handle against registration. So this is one point that has to be kept in mind. Second, the distinction between cognizable offense and non-cognizable offense, I'm not aware of any country where Anglo-Saxon system prevails where this kind of distinction is there. A particular act is either a crime or not a crime. Now, this distinction between cognizable and non-cognizable, frankly, our parliament has not, it's a legacy of the past, our parliament has not given thought to it. I am of the opinion that parliament should give a serious thought to it. Those human acts which are worthy of being crime, they should be rendered cognizable, and the rest should be deleted from the statute book. This is my opinion. This creates problem. So, statistics. Now, you don't have to go to the state government. You don't have to invoke section 356 to set the problem right. My opinion is the SP should be made responsible for free registration. I belong to Rajasthan cadre, where compared to other states, registration is freer. Madhya Pradesh is also all right because my experience is pan-India. Punjab and Haryana, unless there's a murder or attempted murder, no case is registered. Delhi was also very restrictive. Bustling capital town, and they would register only 50,000 cases. Now, last 2 or 3 commissioners, registration has become a little liberal. Now, Delhi is West Bengal. I served in this North Bengal frontier and North Bengal, and I went to police station in Siliguri area.
and the population of the police station was over 2 lakhs. I said, how many FIRs do you register? They register only 50 FIRs per year. Rest, they just don't register. So the statistics problem is a police creation. It's not a legislative creation. I will call it a SP creation. I know of an SP Rajasthan rose to be the DGP and all that. So his DIG gave him an adverse ACR for free registration. He says you don't have control of crime. When the government asked for his explanation, he says, let this adverse observation remain in FIR, in my ACR. Give me the liberty to display it on my board in my office. The government then did that. They said, okay, we withdraw it. They removed this thing. So it's not a legislative problem. It's a police problem. And I'll call it, it's not even DG's problem. It is SP's problem. SP should be made accountable. And I stop here. Second part is investigation, effective investigation. Courts, day and night keep on crying. Investigation is bad. Particular Delhi courts, they are vicious. Frankly, we attach too high a value to the court verdict. But the courts have, judges have, what you call feet of clay. So all that they say is not correct. When they keep a case pending for 20 years and they have no heart to convict, then they find fault with the police investigation. I'm not saying there are no faults in police investigation. There are faults in police investigation. There are deficiencies, but they are being exaggerated by courts and all that. So courts are holy cow. They have to come down. But by saying this, I'm not saying that our investigation is good. It needs to improve. And the first requirement is integrity of the investigating officer and integrity of the superintendent of police. When superintendent of police is honest, the entire system becomes honest 80%, not 100%. When the superintendent of police is dishonest, I divide, as an anti-corruption man, I divide officers in 3 categories. One is top 20% who will always remain honest because sanskar is of being honest. Then bottom 20-30%, they will always remain dishonest. They will try to make money. Akbar Birbal का किस्सा है, वो समुद्र की लहर गिरने में पैसे बना लेते हैं, उनका आप कुछ नहीं कर सकते. But in between 50 to 60%, they see which way the wind is blowing. If the overall ecosystem is that of honesty, they become honest and they are very critical. And if the overall system is dishonest, they become dishonest. So therefore, SP sets the tone. Police system entirely is dependent on the superintendent of police. So IPS is to blame for this. No sub-inspector is to blame for this. No government is to blame for this. We IPS officers have to do a lot of introspection. So without honesty, there can't be prompt investigation. Without honesty, there can't be effective investigation. Without honesty, there can't be success or successful and meaningful investigation. Honesty is the first requirement. Second requirement, this science and technology, other things will come much later. Second requirement is political neutrality. You're honest, but you want to hold on to a job. So therefore, pressure comes and it will come. When I was IGCID crime in Rajasthan, I went to a particular district, the young lady also went police, a drug case she closed. I said, how can you close a drug? So much drug has been recovered. And recovery memo is there. He says, sir, MLA साहब का फोन आया था, वो बड़े पावरफुल हैं, चीफ मिनिस्टर की पहुंच है, मेरी पहली पोस्टिंग मेरा ट्रांसफर करा लेते. So what I'm saying fiscal honesty, and second, I'm saying political neutrality. Once you have these 2 things, other things will fall in place. I have promised not to talk much, so I stop here. Third is court system. Court system has collapsed. Court system has collapsed. I give you some statistics. Supreme Court pendency 2017, 58,000. Now it has increased to 70,000. I wrote a paper. Mind you, at the time of independence, United India, there were only 500 cases pending in the Supreme Court. Now our Supreme Court is spending most of its time in PILs because that brings their name in the newspapers and their grandchildren name their names, read their names. So PIL, we are wasting our time. Murder and rape cases, they are being ignored.
So Supreme Court pendency has increased to 70,000. High Court since 2017, it was 40 lakhs and 41 lakhs. Now it has gone further because of Corona. Lower courts, it was 2.74 crores. Now, latest figures show that it has exceeded 4 crores. Now, if this is the number of courts that we have, and this is the attitude that the judicial officers have, approach the judicial officers have, this pendency can't be knocked off even 200 years. So I don't entirely blame the judiciary. My analysis shows that the number of courts in place in the country is also grossly inadequate. We have about, in lower courts, 1,800 judges and magistrates, everything included. Now, to knock off this pendency, we need to have about 80,000 judges and magistrates. For that, a lot of money is required. And this concept of fast-track courts, the biggest fraud. I've done many cases where fast-track courts are too fast without any justice. Every court should be a fast-track court. I'm not entirely blaming judiciary. Judiciary I'm blaming, but I'll come to a little later. Number of courts is grossly inadequate. When a particular sessions court has 200 murder cases filed, all that they can do is to तारीख पे तारीख. अभी अरुण शौरी ने कुछ दिन पहले, साल भर पहले किताब लिखी थी, Anita gets bail. It was about his wife and took 2 years in a small matter, environmental matter, to get bail. This is how it happens. So therefore, number of courts has to increase. Second, approach. Our judges have lost the will to dispose. They feel कि पेंडेंसी तो रहेगी, क्योंकि पेंडेंसी रहने से उसका बहुत इज्जत बढ़ती है, बहुत उनकी मान मर्यादा होती है, वकील आगे बढ़ घूमते हैं, अरे साहब हमारी सुनवाई कर लीजिए. तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं. इसका सॉल्यूशन एक दिन में नहीं है, एक आदमी के हाथ में नहीं है. टू टॉक अबाउट पुलिस रिफॉर्म्स इज फ्रॉड. वी शुड टॉक ऑफ judicial reforms. Or if the central government, if I were the prime minister, I'll constitute a commission for joint reform in judicial system along with the police system. And that is the answer to the problem. That's all that I have said. Excellent. I think that was a brilliant exposition from your side, Sharma Sahab, on in a very nuanced sort of way of the issues at stake and what we've been discussing, and extremely relevant and very, very appropriate. Now we have some questions from the audience, so I will read them out and also invite responses from you all. So the first, some of these questions are actually comments also, but nevertheless, I'm reading them out. From Mr. Lakshmi Narayana, corruption is multidimensional. The first step is to make policing system more accessible and friendly. People should feel confident to approach such a system. As ML Sharma Sahab has said, that is indeed a position. And since this is not a question, I'm not posing it to anyone yet. However, I will request, both the speakers, Mr. Maithili Gupta and Mr. ML Sharma, to quickly comment on this observation of Lakshmi Narayan ji, that corruption is multidimensional. The first step is to make policing system more accessible and friendly so that people should feel confident to approach. Do you feel that this is an appropriate observation, or you think this is a little exaggerated? Maithili Gupta and then ML Sharma. Sir, ये बहुत सही बात कही है. I am 100% in agreement with Mr. Lakshmi Narayan, but I would like to stick to it that let's not just move the things for the sake of comments. I am saying whether these certainties are the feasibilities or not, why they are being governed by the honesty or dishonesty. If somebody is not doing his legal obligation, he should be suspended. He should be fixed legally. He should be fixed administratively. Why we are saying कि वो corrupt है, फलाना है? Why we are looking into it कि साहब उसका जो है ना political compulsion है, वो survive नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हमें जो है, जब यदि हम उसका गला ही पकड़ लेंगे, तब वो अपने जो है ना पॉलिटिकल आका को कहेगा कि हमें जो है
हमारी नौकरी जो है ना दांव पे लगी हुई है, हम जेल चले जाएंगे, हम सस्पेंड हो जाएंगे, आई विल नॉट फॉलो यू, आई विल नॉट ओबे यू। सो लेट द रूल ऑफ लॉ मस्ट प्रिवेल, अदरवाइज हम कुछ भी कहते रहेंगे। आई एम सेइंग कि हम चारों तरफ जो है बहाने खोजते हैं, व्हाई वी आर नॉट प्रोवाइडिंग ए राइट काइंड ऑफ द सिस्टम। जैसे हमने पहले उसमें कहा है कि आपकी एफआईआर बिना थाने जाए लिखी जाना चाहिए, बिकॉज थाने वाला तो आपकी रिपोर्ट नहीं लिखेगा, वो सिर्फ जो है ना कुछ आकाओं के कहने पे ही आपकी रिपोर्ट लिखेगा। और यदि आप जमीन से जुड़े हुए हैं तो मेरी बात से हर व्यक्ति जो है ना सहमत होगा, नंबर 1। नंबर 2, आई वांट टू से, जैसा हम पहले इसमें कह रहे हैं कि बिना थाने जाए रिपोर्ट लिखी जाए, उसी टोन में मैं कहना चाहूंगा कि बिना कोर्ट जाए कोर्ट ट्रायल होना चाहिए। लॉ ऑलरेडी प्रोवाइड्स फॉर द एड हॉक जजेस, सो वी कैन हैव द करोड़्स ऑफ द जजेस। जब तक यदि हमारे करोड़ में पेंडेंसी है तो करोड़ में जज हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? यदि हम एक टेररिस्ट के लिए रात के 5 बजे तक बैठ सकते हैं तो एक कॉमन सिटीजन के लिए क्यों नहीं बैठ सकते हैं? सो आई एम सेइंग that there should be a timeline to dispose of the case within 1 month, and the trial must happen round the clock, and trial should happen not in the court. उसका जो समन्स वारंट की तामीली है वो हमारे क्राइम फ्री भारत के जो है ना पोर्टल के थ्रू हो सकता है, जिसमें कि विद इन आवर्स वी अश्योर यू द एजुकेशन ऑफ इट। यदि शाम को 5 बजे कोर्ट डिसाइड करती है कि मुझे कल 11 बजे जो है ना हियरिंग करना है, तो दैट इज ए डूएबल थिंग, उसको किसी और पुलिस को ओवरबर्डन करने की जरूरत भी नहीं है। हमें ऐसे सिस्टम को लाना पड़ेगा और हमें बैक एंड में जो है एआई को यूज करना पड़ेगा, जो एज ए इंटरवीनर आए कि जस्टिस इज बीइंग डिफीटेड, डिफेंस और प्रोसिक्यूशन ने हाथ मिला लिए हैं, सब लोग जो है ना कोर्ट में ड्रामा कर रहे हैं। नाउ आई एम हियर इंटरलोक्यूटर, आई वुड लाइक टू जो है ना ब्रिंग सर्टेन फैक्ट्स, तो आई एम सेइंग कि हमें थर्ड अंपायर की भी जरूरत है कोर्ट में। और जो हमारी कोर्ट्स हैं वो इतनी मजबूर हो गई हैं, वो उन्हीं वकीलों के बीच में आ रही हैं। हमने कोर्ट के अंदर आई हैव जो है ना गॉन फॉर द मेनी जो है ना एविडेंस इन कोर्ट, हमने जजेस की बहुत दयनीय हालत कोर्ट में देखी है। उनके सामने रोज जो है ढेर सारे ऐसी चीजें की जाती हैं जो कि क्राइम की कैटेगरी में आती है, बट दे डोंट डेयर टू टेक इट्स कॉग्निजेंस। तो हमारा कहना है कि हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको करेगी, एंड इट विल बिकम ए पिटिशनर कि हे जज साहब ये इसने आपका जो है ना ये लीगल ऑफेंस किया है, प्लीज काइंडली टेक कॉग्निजेंस। अभी जो जज बैठा हुआ है, ही इज बाइंग पीस इन द कोर्ट, क्योंकि वो उसे सूट कर रही है। सो लेट द रूल ऑफ लॉ शुड कम। करेक्ट। शर्मा साहब। राघव साहब, जो ये स्टेटमेंट आया है एक्सेसिबिलिटी फ्रेंडलीनेस, इससे अच्छा स्टेटमेंट कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल ये सही ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल ये सही बात है। अब सवाल ये है कि इसको कैसे किया जाए। ये तभी हो सकता है जब पुलिस ऑफिसर्स एम्पैथेटिक हों। पुलिस ऑफिसर्स एम्पैथेटिक तभी होंगे जब वो अपनी पे पैकेट में रहना सीखेंगे। जो पुलिस ऑफिसर अपनी पे पैकेट में नहीं रहता है वो कभी एम्पैथेटिक नहीं हो सकता है, बिकॉज ऐसा आदमी ही वर्क्स फॉर हिमसेल्फ, नॉट फॉर द गवर्नमेंट और फॉर द पब्लिक। तो मैं घूम फिर के फिर उसी पुरानी बात पे आता हूं जो आज तक किसी पुलिस ऑफिसर ने पसंद नहीं करी है, कि हम क्राइम सिचुएशन को डिस्कस करते हैं, नॉन रजिस्टर्ड एफआईआर को डिस्कस करते हैं, नॉन कन्विक्शन डिस्कस करते हैं, कभी हम पुलिस के आचरण को डिस्कस नहीं करते। मैं कहता हूं कि ऑनेस्ट ऑफिसर अगर तो गाली भी देता है, थप्पड़ भी मारता है, तो कहते हैं नहीं नहीं वैसे ईमानदारी में कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं। एक तरह से हम गाली देते हैं, जूता मारते हैं, दूसरी तरफ से पैसा नहीं छोड़ते हैं, और जूता इसलिए मारते हैं ना पैसा नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो पुलिस में सबसे अगर कोई बड़े रिफॉर्म की जरूरत है, ना डीजी लेवल पे कभी डिस्कस हुआ है, ना एसपी लेवल पे कभी डिस्कस हुआ है, ना नेशनल लेवल पे कभी डिस्कस हुआ है, कभी ये डिस्कस ही नहीं हुआ है कि हम अपनी फोर्स को ईमानदार कैसे बनाएं या ना बनाएं, और कैसे बनाएं। वो इसलिए कि हम सब उस पाप में कमोपेश शामिल हैं। जो बिल्कुल निर्लिप्त हैं आईपीएस में वो 20-25% है, बाकी किसी न किसी तरीके से वो गाय भैंस कल्चर में कहता हूँ राजस्थान में, उसमें सब पले हुए हैं। स्टेट्स में ज्यादा रहते हैं, गाय पाल ली, उसका दूध बेच दिया, 15 ऑर्डर भी रख लिए। कुछ इस तरह की बेईमानी है, कुछ दूसरे किस्म की है। क्योंकि ज्यादा बेईमानी पुलिस में तो वही करते हैं जो जिले में रहते हैं, बाकी तो कर नहीं सकते हैं, तो वो दूसरा ये काम कर लेते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लग गए। तो मैं कुल मिला के ये कहता हूं कि पुलिस को अगर सुधारना है
तो ईमानदारी को लाना पड़ेगा। मैं ये भी कहता हूं कि अगर हिंदुस्तान में 2000 ऑफिसर्स को क्रिटिकल पोजीशन में लगा दिया जाए, या डिस्ट्रिक्ट सुप्रीटेंडेंट पुलिस है, पुलिस कमिश्नर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स है, आर्मी चीफ है, रेलवे कुछ मैनेजर्स और अच्छे बैंक ऑफिसर, बस 2000 आदमी चाहिए मुझे। 2000 आदमी अगर सही जगह पे आप लगा दिए, कंट्री बड़ा हो गया, 4000 कह लीजिए, तो इंडिया की ग्रोथ रेट 20% हो जाएगी। पुलिस इज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक, one must realize. I am what you exaggerating. To make a point, you have to exaggerate. I am making it, so saying it dramatically, but I genuinely believe that police system is apt and efficient. All segments of our economy, all will improve, and all segments of society will prosper. This is my view. This is a correct statement. Thank you, sir. The extremely pertinent views, and I would, as an administrator, say that to a great extent this argument applies to the administration. Mr. Nagendra Kumar has also made an observation that I would like to add, that if a case is not registered, one may also approach to the state or the National Human Rights Commission. Certainly, that's a pertinent observation. Mr. Lakshmi Narayanan has made one more observation. Common man, which is like a question, common man cannot do such a lengthy work, and many are not aware of such options. He's referring to Mr. Maithili Gupta's treatise about the articles under the CRPC. They want simple, accessible, and friendly environment so that they do not have, so that they have more confidence in the systems. I would like to elaborate this by, as a questionnaire myself, that, you know, when Mr. Maithili Gupta साहब, आपने जब कहा कि SHO को हक नहीं है आवेदन या एप्लीकेशन मांगने का, तो ऐसे में अगर व्यक्ति थानेदार के सामने गया है, स्टेशन हाउस ऑफिसर के सामने, तो इतनी हिम्मत कैसे करेगा जब आदमी खुद परेशान है, खुद वो असमंजस की स्थिति में है। और अगर SHO से, जैसा कि शर्मा साहब ने बताया कि ललिता कुमारी प्रकरण में इस प्रकार की भी उसमें वो है कि उसकी वो तफ्तीश के लिए वो मांग सकता है, तो अगर SHO आपसे कह रहा है कि आप एप्लीकेशन लिखिए, आप मना कैसे कर सकते हैं उससे? पहली चीज, कैसे आप हिम्मत कर सकते हैं कि आप SHO को बोल दें कि नहीं साहब, मैं एप्लीकेशन तो नहीं दूंगा, आप तो सीधे मेरी FIR दर्ज करिए। तो ये पॉइंट्स सर, जो एप्लीकेशन है, दैट एप्लीकेशन इफ इट इज कमिंग अंडर सेक्शन 154(1), देन SHO मस्ट रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ FIR। यदि वो 155 में है, देन ही शुड रिकॉर्ड इट अंडर 155। यदि उसे डिलेमा है, देन ही शुड से कि ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जनरल डायरी में, एंड देन ही शुड रिकॉर्ड द रीजन ऑफ हिज डिलेमा, एंड देन ही शुड कंक्लूड हिज इंक्वायरी विद इन द टाइम फॉर मेकिंग हिज माइंड that whether the cognizable offense is made out or not. जब इस परिस्थिति में है, बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की जरूरत है। यदि अज्यूम करिए एक संस्था इसके पीछे लग जाती है, तो फरियादी ने तो अपने चीजें एक बार सौंप दी, आगे की लड़ाई तो वो संस्था और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कर रही है। उसे ना किसी SP के पास जाना है, ना उसे किसी कोर्ट के पास जाना है। सेक्शन 39 के तहत वो नागरिक सब जगह जा रहा है, क्योंकि हमारी ये लीगल ऑब्लिगेशन है, तो हम इसको एक लॉजिकल एंड तक से हम परस्यू करेंगे। तो हम जो है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में, इससे ज्यादा यूजर फ्रेंडली तो कोई चीज हो ही नहीं सकती है कि आपने जो है ना क्राइम फ्री भारत के पोर्टल पे सब चीज डाल दी, जिसको जो ना वहीं पे लीगल एक्सपर्ट्स ने एग्जामिन कर लिया। यदि वहां पे लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत है, तो लैंग्वेज इंटरप्रेटर ने वो कर दिया। यदि जो है ऐप के माध्यम से रिकॉर्डिंग हो रही है, उसने आपकी इंजुरी मार्क्स से लेके आपके जो है ना विक्टिम्स का फिजिकल स्टेटस से लेके और जो भी कैप्चर हो सकता है वो सब कैप्चर कर लिया है। आजकल 3D बहुत स्मार्ट जो है ना टेक्नोलॉजी आ गई है, जिससे वी कैन डू लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो आज की पुलिस करने की औकात नहीं रखती है। वी कैन इवन ड्रॉ कि यदि गोली चली है तो गोली में मारने वाला कहां खड़ा होगा। These things, the technology will draw the inference by simply taking picture. It can have that temperature gradient, this gradient, that gradient. हमारे पुलिस वालों को तो कुछ मालूम ही नहीं है। That's why I am saying that technology must fix everybody. And आप ईमानदार हैं या बेईमान हैं, आपको बेईमान होने का हक नहीं है।
आप बेईमान तब तक रहें जब तक कि सिस्टम आपको पकड़ के आपका गला नहीं दबा देता है। हम कमजोर और लचर सिस्टम को पैदा करते हैं और फिर कहते हैं कि साहब जो है ना समस्या सॉल्व हो जाएगी यदि एसपी ईमानदार हो। भाई द सिस्टम शुड बी गवर्न बाय द प्लेजर ऑफ एसपी और एनीबडी। यदि एसपी बेईमान है तो व्हाई ही इज नॉट बीइंग फिक्स्ड? आज उल्टा हो रहा है, सिस्टम को बेईमान ज्यादा पसंद आ रहे हैं, जो ईमानदार होता है ही इज नॉट बीइंग अकोमोडेटेड। So, ML Sharma Saab, I would on this point come to you because you made a very, very pertinent and very useful observation जो मैंने पहली बार सुनी, that the offences should be classified into those which are crimes and those which perhaps, please pardon my poor understanding of this thing, that those which are serious or crimes and those which are non-crimes. Yes. And सर मेरी आपत्ति है इस क्वेश्चन में। सर एक मिनट सर मुझे सर एक आपत्ति कर लेना दीजिए, क्योंकि वो जनहित में बहुत जरूरी है। हम इतने अमीर नहीं हैं कि जो है आप उसको बहुत सीरियस कर दें, और नॉन सीरियस में यदि आप कहते हैं किसी को जूता मारना नॉन सीरियस है और ये मैं गुंडा हूं और रोज 5 जूते किसी को जाके मारूं और कहें कि वो तो जो है ना नॉन सीरियस ऑफेंस है, nobody will be helping him and that poor chap is not having the wherewithal to go to the court or court is not free to take cognizance of it, वो बेचारा न्याय के लिए कहां जाएगा? It is very easy to say these things in our office. What about we must put ourselves in the shoes of the victim? Fair enough. Maithili, that's fine. But Sharma Saab, you have raised a very important and very pertinent issue of classification and declassification, so as to simplify the entire mechanism of dealing with crime. I want to hear a little more on this. I mean, for my own understanding, and I'm sure for other participants. My understanding of the whole situation, I have this game for donkey's years. Ji. We in India have fossilized mind, our legislature, as far as the law is concerned. Whatever is there, we are perpetuating it. Of late, we have started making some changes in the CRPC and some very small changes in the Evidence Act, but IPC has more or less remained untouched. And where, on the basis of pursuant to this consequent of Abhya, this thing, they have modified the law relating to rape, and they have brought drastic provisions. So that is devastating and very dangerous for the society. Earlier law definition of rape in section 375 was very good. In other words, what I'm saying is the intervention of legislature in the IPC have been disastrous. Now, on this point, I want to say this. I'm not saying that all non-cognizable crimes should be deleted from the statute book. I'm saying the lawmaker should apply their mind to it. They should do it. They have not done it. And some of these crimes can be safely taken out of this thing. All that should be codified in the IPC should be cognizable, and that which is not cognizable should be taken out. Let the legislature apply its mind. Neither Maithili, Sharan, Gupta is a legislator, nor am I, and we don't have that wisdom which the parliament has. Courts, bow to the wisdom of the parliament. Let the parliament apply its mind. This is what I want to say. Section by section, I have done an exercise, but अंधों के शहर में शीशे बेचने से कोई मतलब नहीं है, कोई चलता नहीं है, तो इसलिए हम चुप बैठे हैं। ये करने दीजिए, इसकी जरूरत है। देखिए, नेपोलियन कोड जो दुनिया का सबसे बड़ा सिविल लॉ था, उसको भी चेंज किया गया है। नेपोलियन से बड़ा कोई लॉ मेकर नहीं हुआ है। नेपोलियन ने 40 बैटल यूरोप की जीती और अंत में उसने ये कहा, इफ आई मेड एनी कंट्रीब्यूशन टू आवर सोसाइटी इज माय कोड, उसको भी चेंज किया गया। तो क्राइम क्या है, ये समय, काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। टुडे व्हाट इज क्राइम, मे बी टुमारो इज नॉट क्राइम, एंड what is not crime today, maybe it becomes crime tomorrow. So we have to have a little flexible approach and little flexible mind when we are thinking. We should be emotional. Emotions are not going to solve the problem. It's the logic and the consistency of thinking. There's one part. Sure. Second part, I agree with you about the filing of complaint for the SHO. See, law says two things. One, if the complainant goes and makes a report about cognizable crime, then he has two options. Either he gives in writing, then the SHO has to record it ditto in the FIR,
If he can't write or he can't read or he doesn't want to give, then he has to make oral. So FIRs are two kinds: written FIRs, oral FIRs. There's nothing wrong. What Mr. Gupta is talking is a third situation where the SHO gets some information somewhere and nobody is before him, and then he says, "I information has come to me and so place some murder has taken place." He has that option, but generally when the complainant is present, that option is never exercised. I have been SP of 8 districts, never happens. And therefore, filing of complaint or SHO's requirement of written complaint is legitimate. If he can't make, then he should make an oral statement. If oral statement also doesn't make, then the SHO is, I mean, there's hardly anything because SHO doesn't have personal information that time has taken place. So this is my second thing. Right, sir. So we'll come to the next question from Mr. Parth Semwal, advocate. Sir, please discuss complaint against IO under section 166A, read with 190 and 200 filed against IO for non-registration of FIR and further limitation of 166 AC. Maithili and Gupta sahab. I feel these sections should be very liberally applied so that अभी जो आज की जो डिस्कशन की सोसाइटी बन रही है कि हमारा प्लेजर डॉक्ट्राइन से लॉ चल रहा है, दैट मस्ट जो है ना कम टू हॉल्ट. वकील साहब की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं. द लीगल प्रोविजन मस्ट प्रिवेल एंड रूल ऑफ लॉ मस्ट बी देयर. इट कैन नॉट एंड इट मस्ट नॉट बी ड्रिवन बाय माय पर्सनल कैरेक्टर. इफ इट इज गुड कैरेक्टर इज देयर, दैट शुड बी देयर. But by chance, if our system is not able to provide that kind of the character, the law must make it sure that victims should get justice. हम अपने जो है ना लफाबाजी में, हम अपने आर्गुमेंट में अपने पिटिबल सिचुएशन से बाहर निकल जाएं. हम भारत के उस नागरिक के बारे में सोचें जो बहुत दयनीय हालत में जी रहा है, जिसे गुंडा जो ना उसका जीना मुश्किल कर दे रहा है. रियल एस्टेट में आज गुंडागर्दी का इतना बुरा हाल हो गया है कि आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं. आई एम वेरी श्योर जो है ना शर्मा सर के पास ढेर सारे जो है वकील, बहुत सारे ऐसे केस आ रहे होंगे जहां पूरा सिस्टम सुनवाई नहीं कर रहा है. हम पहले आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको डिफेंड करें. आई एम सेइंग वी मस्ट बिकम द रीजन एंड वी शुड बिकम दैट हेल्प इन ब्रिंगिंग दोज चेंजेस रादर देन जस्टिफाइंग फॉर एनी रीजन. Correct. Now, वकील साहब ने जो कहा है कि 166A read with 190, it must be applied, and anybody who is not really doing his legal obligation cannot take shelter के उसके पास जो है ना political interference था, ये था, वो था. This political interference का जो है आप अपने आका को जवाब दें और if possible we can insulate it. But हमारे political जो है ना आका इतने होशियार हैं कि जो पुलिस सुधार का जो है 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, उसके बावजूद भी उन्होंने पॉलिटिसाइजेशन को आज पूरी तरह से 100% कर दिया है. आज पुलिस विभाग में एक भी कांस्टेबल भी जो है ना बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के पोस्ट नहीं हो रहा है. दिस इज द रियलिटी ऑन ग्राउंड. Correct. Maithili ji, I'll take up two questions from Mr. Shlok Chandra, one for you and one for Mr. ML Sharma. The question for you is, what are your views on quashing of FIRs on the basis of settlement agreements? Should it be encouraged or discouraged strongly? This is the question for Maithili Sharan ji. सर, मेरा इसमें मानना ये है कि सेटलमेंट जो है, क्राइम इज ऑलवेज अगेंस्ट द सोसाइटी. हमारा फरियादी यदि अपने लाभ के लिए सेटलमेंट कर लेता है, इट मे बी गुड टू दैट कंप्लेनेंट. What about the setting the wrong tradition? I feel majority of the compoundable offenses should be for the compounding of the fees, but that person जो है ना should be held guilty. Settlement does not mean you have not committed crime. So settlement should bring some compounding fees and some solace to the person. It might bring some punishment down, but it should not be treated that he is exonerated. Correct. Question for Mr. ML Sharma, sir. How many people? I have a view that considering the prevailing scenario, settlement between the parties in matters involving financial transactions. I'm not talking about rape. I'm not talking of crimes of hurt. I'm not talking of bodily crimes. It should be encouraged.
In fact, now you have no choice. The ruling of the Supreme Court, that famous Dunlop case, it came about 10, 12 years back, and it has been reiterated time and again. If the parties settle between themselves, court and the society should be very happy. But I'm talking only of the financial aspects of it. I'm not talking of hurt crimes or bodily crimes, things like that. This is point one. Point two, this is also being encouraged by new chapter, section 21A of the Code of Criminal Procedure, which provides for, they don't call it settlement, they call it 25A. There's a particular word. Give me half a minute. Gaurang? Oh, Gaurang. There's a full chapter. There's a particular terminology used for it. The plea bargaining? Plea bargaining नहीं, plea bargaining नहीं, हाँ sorry, ये plea bargaining, plea bargaining में वो बात होती है, yes, उसमें कोई 20-25 सेक्शन है. Plea bargaining में ये होता है कि the two things in that. One is bargaining about the counts in which there is an agreement between the prosecutor and the defendant or the accused, and second aspect is the quantum of punishment. Suppose there are 3 counts against you, one section 326, another some 323, something. He says, "Sir, you remove 326 and 323 apply to me, and I agree to that." Now this is one plea bargaining. Second is, now 323 involves punishment up to 6 months. So the accused says, "हाँ मेरी इज्जत खराब हो गई जेल जाने से, मेरे फाइन लगा लो, 10,000 लगा लो, 20,000 लगा लो." This is called plea bargaining. ये चैप्टर जो है, I call it unknown chapter or forgotten chapter of the Code of Criminal Procedure. Now plea bargaining and this settlement of parties, they drive in the same direction. Of course, there's one difference, as Mr. Gupta said. In first part, compounding, there's no guilt attached. But the second part, plea bargaining, guilt is indirectly admitted. And then some punishment is. So 3 parties get involved: the public prosecutor, the accused, and the court. Now, even if the 2 parties settle on the basis of plea bargaining to settle a case, if the court doesn't agree, then doesn't come through. So therefore, this is my view on this, that we should encourage settlement. We should encourage settlement. That's the only way to go about it. In fact, section 320 of the Code of Criminal Procedure, compounding offences, is very restrictive. It should be further expanded. All financial matters and all small hurt matters. देखिए मेरी बात सुनिए, आपने मेरी पगड़ी उछाली, मैंने आपने गांव के सामने हाथ जोड़ लिया, आपके पैर में गिर गया, matter is settled. Catharsis is there. Society will be happy both ways. So therefore, we should encourage it. And financial matter में दिक्कत ही नहीं है. You have caused me loss of 1,000 rupees. Now you are compensating me by say 11 rupees or 12 rupees. Both parties should be happy. Society should be happy. This theory of crime against the state, well, it's there, and theories keep on changing. We should change with the times. Correct, sir. Sir, another question for you from Mr. Shlok Chandra. How many people did you have to summon in the investigation on Mr. Ranjit Sinha for the purpose of preparing your report, and how long did the whole process take? I'm an odd man. I'm a hardcore person. I'll never disclose this. But if he's so interested, one copy of the report is lying, even though Ranjit Sinha is dead. But there's a confidentiality about inquiry. Supreme Court has not disclosed. But if he comes as a friend to my office, I allow him to sit in my office and read the report. Okay, sir. Right, sir. Advocate Purnima ji has raised the question. पुलिस स्टेशन में जमानत देने की आदत गलत है, उसके लिए क्या कोर्ट में छोड़ देना चाहिए या पुलिस को जमानत देने की पावर रहनी चाहिए? देखिए, इसमें क्राइम्स 2 किस्म के हैं. वन इज बेलेबल एंड सेकंड इज नॉन बेलेबल. बेलेबल क्राइम में भी पुलिस वाले लालच में आजकल बेल नहीं देते हैं. बेलेबल क्राइम में स्टैट्यूटरी राइट है. वो सीआरपीसी के जो शेड्यूल है उसमें देखिए, बेलेबल नॉन पे हर क्राइम पे सामने लिखा हुआ है. तो बेलेबल क्राइम में तो उसका स्टैट्यूटरी राइट है बेल लेने का, और पुलिस को बेल देनी ही चाहिए. अब नॉन बेलेबल में पुलिस ऑफिसर का राइट नहीं है बेल देने का. तो नॉन बेलेबल में necessarily the accused has to knock at the doors of the court. Correct.
Yes, sir. Next question, sir. Hi, everyone. My question to Mr. Gupta. Why did the police, this is from Mr. This question has been raised by Mr. Praveen Dubey. Hi, everyone. My question to Mr. Gupta. Why did the police not win the public's trust after so many years? Still, the police is not interested in becoming part of the police. Praveen ji, this is a very general question. So I will, request the speakers to say it in their rounding up. I'll go to the next question. Rahul, to everyone. Sir, good evening to all. My questions to the panel is just simple. How can we make the system move in the same manner against FIR lodged by someone who's backed up by political or internal connections within the police department and a common man who has no backing? That means, how do we remove the distinguishing this thing between a common man and a politically backed person? As it's common practice that to move your case up and to make police do their investigation, one needs to have backing. This is what Maithili and Gupta Sahab has already said. I will cover the other questions and then we can come to Praveen Dubey and Rahul Gupta's questions. Purnima ji, criminal कहते हैं मुझे मारो मत पुलिस को सौंप दो. क्रिमिनल कहते हैं मुझे मारो मत पुलिस को सौंप दो. पुलिस को काम का कहते हैं तो कहते हैं हम कम पुलिस वाले काम पर है, कमी पूरी करवाए. ये मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया. Maithili ji, have you understood the question? नहीं सर, वो मेरे ख्याल से there's a lack of clarity. Probably he is trying to say that it is probably some positivity of the manpower or those kind of. मैं समझ पाया हूँ. जी सर. वो पूर्णिमा जी ये कहना चाहती हैं कि पुलिस का डर खत्म हो गया है. पुराने जमाने में जब हम सर्विस ज्वाइन शुरू किए थे तो वो एसएचओ मतलब थाने में रात बिताना सबके लिए बड़ा भारी पड़ता था, क्योंकि उस जमाने में बहुत कुछ होता था. अब इन चीजों को मैं ओपनली नहीं कह सकता हूं. अब वो पुलिस वालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं. वो अब क्रिमिनल्स को सलाम करने लग गए हैं और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में या लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ा टेल ट्विस्टिंग करनी पड़ती है. पुलिस वालों ने बंद कर दिया, इसलिए ही फील्स सेफर that he'll give a little money here and there and nothing will happen to him and next day he'll seek bail and all. This is what she wants to say. So इसमें प्रॉब्लम एरियाज हैं, हम ज्यादा ओपनली इसमें नहीं बोल सकते हैं, लेकिन पुलिस का खौफ खत्म हो गया है, जिसको इकबाल बोलते हैं. और इकबाल होना चाहिए, और इकबाल उसी पुलिस ऑफिसर का हो सकता है जो ईमानदार हो और लोगों के प्रति सद्भावना रखता हो, एम्पैथी रखता हो. ऐसे पुलिस ऑफिसर कुछ तो हैं लेकिन कम हो गए हैं. उसमें पुलिस वाले हम लोग सब मिलकर पॉलिटिशियन को ब्लेम करते हैं. मैं ये कहता हूं कि पॉलिटिशियन टोटली ब्लेम वर्दी नहीं है, टोटली ब्लेम फ्री नहीं है. उसको कुछ ब्लेम आना चाहिए कि वो सिस्टम उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है, इसको इधर बदल दिया, उसको उधर बदल दिया, किसी को टिकने नहीं देते हैं. लेकिन उस सब के बावजूद मैं पॉलिटिशियंस के प्रति बहुत हमदर्दी रखता हूं, क्योंकि मैं उनको मस्टर रोल वाला कहता हूं. आज उनकी नौकरी है, एमएलए बने, मिनिस्टर बने, 5 साल बाद में नहीं बने, पहले तो 5 साल सरकार नहीं थी, 2 साल में हो गया, तो वो मस्टर रोल वाले हैं. लेकिन जो सिविल सर्वेंट है, जो आईएएस वाला है, आईपीएस वाला है, उसको मैं सरकार का दामाद कहता हूं. पता है क्यों? एक इम्तिहान पास किया और जब तक आपकी एवरेज एसीआर है, एवरेज है थोड़ी ऊंची, और जब तक आप मिनिस्टर को जाके एक थप्पड़ ना मारो या गाली ना दो, आप ऊपर ही जाते रहते हो, ऊपर ही जाता है. तो कोई आईपीएस ऑफिसर नहीं है जो डीजी से कम रिटायर हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द एज प्रोफाइल. जब इसका प्रिविलेज आपको मिला हुआ है तो थोड़ा रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा. तो वो हम लेने को हायरार्की वाले तैयार नहीं है, और इसलिए हम तैयार नहीं है तो एसएचओ भी तैयार नहीं है. तो ये हमारा डिलेमा है. तो कुल मिला के ये गुप्ता जी हमसे सहमत हो या ना हो, मैं आईपीएस को बहुत कमजोर मानता हूं. फ्रैंकली स्पीकिंग, आईपीएस बहुत कुछ कर सकती है. सर, हमने आईपीएस को कमजोर कर दिया है, अच्छे चरित्र के लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा है. ये नेताओं ने इन आईपीएस ऑफिसर को मास्टर रोल वाला बना दिया है. मेरी बात सुनो, हम अपने अपने दायरे में सब स्वार्थी हैं. हम में से 5 आदमी भी खड़ा होके, आप ऐसे आदमी से बात सुन रहे हैं जो 2 दफा रिजाइन कर चुका है और मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं ऊंचा ही ऊंचा गया हूं. आपके सामने भी बात कर रहा हूं, पूरी बुलंदी से कर रहा हूं. तो हम कमजोर हो गए हैं, अपने आप को हमने कमजोर कर लिया है.
मैं ये नहीं कहता हूं कि एक्सट्रेनियस फोर्सेस आर नॉट वर्किंग ऑन यू। आईएएस को क्या होता है, दूसरे को क्या होता है, हम उस तरफ ही देखते रहते हैं। हम अपनी तरफ देखें, हमने क्या किया सिस्टम के लिए। कैनेडी की वो कहावत मुझे याद है, उसने कहा था, डोंट थिंक ऑफ व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, थिंक ऑफ व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। फॉर आईपीएस ऑफिसर्स आई से, थाने वाने वाले सब काबू में आ जाएंगे अगर हम अपने आप को काबू करेंगे। डोंट आस्क व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन टू यू or what people have done to you, think of what you have done to the people। मैं इतना कहेगा अपनी बात। सर मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहूंगा कि आपके समय में और कुछ हद तक हमारे समय में भी I totally agree, फर्क है। ऐसे लोग थे जो टेक्निकली वाइज होने में ज्यादा जो है गर्व ड्रॉ नहीं करते थे, जो कि पब्लिक के लिए लड़ने और झगड़ने और किसी हद तक जाने के लिए तैयार थे। ठीक है मैथिली जी, अब उनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है। उसको They are बढ़ाना the है। major people. They want उसको to बढ़ाना enjoy है। the advantage of the postings. They want to go for the post-retirement benefit. They damn care for anything else. right, भैया So जी, we will sharing of spoil जो है has बिना become order of the day. वो सब चमी में रहना चाहते हैं, उन्हें अपने माथे पे किसी का पत्ता लगाने में भी कोई शर्म नहीं रह गई है। यदि हम सर इस तरह की खुली बातें कहने की यदि हिम्मत जुटाएंगे सर, तो शायद हम परिवर्तन के लिए कुछ जो है कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। बिना बलिदान के कुछ नहीं होगा। Okay, so sir, I think I will just read out because most of the questions are more like comments. एक प्रेम सेमवाल साहब ने, पार्थ सेमवाल साहब ने कहा है about the February 2021, the Supreme Court led by CGI proposed creating a separate and independent cadre of magistrates to assist the police in collection of evidence. On that, I'm reading out so that you can give up and sum up quickly in 2 minutes your full thoughts. पूर्णिमा जी ने कहा है पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट ऑनलाइन कर सकता है लेकिन एफआईआर नहीं मान्य होती। सारे एविडेंट पीड़ित हो ही क्यों लाएं, पुलिस एविडेंस क्यों नहीं बनाती। महिला थाने भी फैमिली मैटर के लिए बना गया, बताते हैं बलात्कार या छेड़छाड़ के लिए नहीं। फिर एक सवाल लक्ष्मी नारायण जी ने उठाया है, द प्रेजेंट एनवायरनमेंट इज इट पॉसिबल फॉर पुलिसिंग सिस्टम टू वर्क इंडिपेंडेंटली। फिर एडवोकेट पूर्णिमा जी ने कहा है वकीलों को तो जल्दी सुनना ही नहीं चाहते पुलिस वाले, ये सोचकर कि कोर्ट में जाने के लिए आए हैं। सीबीआई की सैटेलाइट या इसरो नजर भी रख रहे हैं लेकिन एविडेंट डिमांड पर ही देंगे, सीसीटीवी कैमरा काम नहीं करता। तो मैं आप लोगों से दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2-2 मिनट में, बिकॉज वी हैव टू वाइंड अप द सेशन, वी आर ऑलरेडी पास्ट 7:30 and I have taken a lot of your time and of the audience. I would request that in 2 minutes, Mr. Rahul Gupta, Mr. Praveen Dubey, Purnima ji's remaining questions and Lakshmi Narayan Saab's remaining statements, if you can just sum up about the overall situation and the way forward, that will be very useful. So 2 minutes to you, Maithili Gupta Saab. सर मेरा कहना यह है कि जो लोग ये बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें सू वहां पिंच कर रहा है। उन सब की बातें सही हैं, उनका नजरिए भिन्न हो सकता है, उनका कहने का तरीका भिन्न हो सकता है, हमारा और उनका अप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये वो प्रॉब्लम है जो वो महसूस कर रहे हैं। सिस्टम मस्ट बी अमीनेबल टू टेक केयर ऑफ ऑल पेन्स वेयर एवर इट इज एग्जिस्टिंग, और हमें सिस्टम को उस पेन को रिमूव करने के लिए बनाना चाहिए। एंड फाइनली द सिस्टम शुड बी ट्यून्ड इन सच ए वे कि थिंग्स शुड बी डन विद द सर्टेनिटी। एंड आई वुड लाइक टू रिपीट दोस 5 कंपोनेंट ऑफ द सर्टेनिटी: सर्टेनिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम, certainty of investigation within the stipulated period of 15 days, certainty of justice within 1 month by making use of the technology without going to trial, without going to court. So there should be a video based streaming and trial, and we can have n number of the courts, and there could be ad hoc courts. You and me can be also ad hoc judges, and there could be n number of the lawyers available. So there should not be any problem. If we could deliver the justice within this period, lot of things will be settled for themselves. Since everybody is becoming the part of the problem, nobody is becoming the part of the solution. So saying के सामने वाले के नजरिए में गलती है,
मैं कहता हूं उन सबका नजरिया ठीक है, हमें वो परिवर्तन लाना चाहिए कि जिससे सब लोगों के वो नजरिए बदल जाएं। मैं यही कहना चाहता हूं। Sharma Saab, sir. I entirely agree with what our friend has said on other points, but one point, Chief Justice is reported to be, this is what you're telling us, that Chief Justice has said that magistrate should be brought in, collection of evidence and all that. This is absurd. No court is a lawmaker. Lawmaker is the parliament. Only parliament can make this kind of a law. A vita dicta of the Chief Justice, oral statement doesn't have any meaning. Another thing that I want to say is that he is talking of the continental system. We follow Anglo-Saxon system. So these two systems are totally different. Like presidential form of government, political field is different, parliamentary form of government. So Napoleonic system or continental system of justice is different from Anglo-Saxon system which we follow. So within the existing framework, this is just not possible. Right. So on that very sound note, since we've taken a lot of your time, I must say that this has been an absolutely useful, enlightening, invigorating discussion. This is something which has been recorded, and we will run it on YouTube as well. And we would send you links. This is something, it's a discussion which is so pertinent for the nation today to move forward, where we have such a large population, and we have, at the same time, we are maintaining democracy, that it is, when maintaining democracy and having a democratic system, it is particularly relevant, important, in fact, I would say imperative to have a good policing system. Thank you very much, Maithili Sharan Gupta Saab. Thank you very much, ML Sharma Saab. Sir, it's been absolutely delightful to hear you and Maithili Sharan Gupta ji. Great discussion. Thank you very much. And of course, all the participants who attended this so attentively, so diligently, so in such a passionate manner with such useful questions. I normally don't see so many questions coming up, but it shows the level of impassioned involvement. Thank you very much. Good night.